Okay, so in the yesterday session, we have seen the list of your antihypertensive drug and their respective mechanism and their adverse effect. We have also seen, we have also started this anti-anginal drugs. Out of that, we have seen what is meant by angina pectoris. So, what is the physiology of your blood vessel constriction and relaxation? What are the different types of nitric oxide synthetase? So, nitric oxide is known as endothelium derived relaxing factor. It is very important because in your blood vessel there are certain endogenous vasodilator compounds which are synthesized locally in the blood vessel. There are certain vasoconstrictors which are also synthesized in the blood vessel like endothelium. We have seen this. We have seen the classification of your drug used in angina 2 3 times. We have also seen the classification. I already explained you a lot of things. Then we have seen the mechanism of action of your nitrates, adverse effect of nitrates. Then okay, in other drugs in that we have seen the beta blockers. Okay, you can see beta blockers in the angina pectoris. Okay, remember nitrates. Okay, remember nitrates or vasodilators. Nitrates they are used for symptomatic relief. They are used for relief of symptoms of your angina and chest pain in an acute condition. Nitrates they are used for the relieving the symptoms of angina pain in the acute attack. Okay. Now all other drugs. Okay, other drugs they are used for the prophylaxis. Other drugs they are used for the prophylaxis. Prophylaxis means prevention. Okay, so nitrates they are used for the symptomatic treatment to relieve the anginal pain. Okay, and other drugs, example calcium channel blockers, these beta blockers and all that. So all they are used for the prophylaxis prevention. Okay, they are used for the prophylaxis of chronic anginal pain. So for the prophylaxis other drugs are there, and for the relieving of your symptoms nitrates are there. Now these are used in the all stages. Beta blockers they are used in the all stages of ischemic disease. जहाँ पे भी इश्यमिया है मतलब जहाँ पे भी ब्लड नहीं जा रहा है, ऑक्सीजन कंजम्पशन कम हुआ है, वहाँ पे ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, सप्लाई कम है. They are all used in the all stages of ischemic heart disease except presmental or vasospastic or variant angina. Now, beta blockers they block the beta receptor and they decrease the sympathetic drive. So they blocks the action produced by sympathetic activity. Okay. During angina, what happens in during angina? Anginal pain normally occurs when you are doing exercise. You are under emotional experience. If you are doing any coitus, okay. So if you are doing any physical exercise, okay, so at that time only you will get a pain because in case of classical angina or angina of effort or exertional angina, that is the most common form. Most common form जो होता है angina का, that is a classical angina. उसमें क्या है कि mostly classical angina में क्या होता है कि coronary artery में आपका क्या है arteriosclerosis हो चुका है. So there is a cholesterol deposition and arteriosclerotic plaque. That's why there is a decreased blood flow to myocardium. Now at the rest you will not feel any pain, you will not feel any discomfort. But when you are doing exercise, so when you are under influence of emotion, if you are having any stress, so at that time your heart rate increases. Okay, due to sympathetic activity. Due to this, workload on heart also increases. So myocardium has to work more in under the stress, or if you are doing exercise, if you are running, if you are doing any sexual activity. So at that time also your heart has to beat fast. Your heart has to it the working of heart is increased. So in that case, now what happens? There is a increased demand of oxygen and blood to the heart, but due to the coronary blockage you are getting very limited amount. So at that time you will feel a pain. So anginal pain, okay, mostly happens during exercise, during emotional excitement, okay, which induces the angina, which result in the increase in the heart rate, blood pressure, myocardial contractility and oxidative metabolism. Because whenever you are under influence of sympathetic nervous system, your heart rate will increase, force of contraction will increase, blood pressure will increase. So if heart rate is increased, the contraction of heart is increased, that means heart will demand more blood, more oxygen, more nutrition. As there is a arteriosclerosis,
you will get less blood, your heart will get less blood due to arteriosclerotic plaque depository in their blood vessel. In that condition, you will develop a pain. So what the beta blockers they do, they block these actions and they decreases the pain. So they increases the exercise tolerance, for example, like nitrates, without increasing the anginal index. They prevent both, okay, they prevent the both subjects to ECG manifestation and cardiac ischemia. जो भी कार्डियक इश्यमिया है और ईसीजी में जो चेंजेस आते हैं, दोनों भी ये क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं. सो मोस्टली these are used for the prophylaxis. They are not useful in the prismental or vasospastic angina or angina of variant. Long-term use of beta blockers after myocardial infarction, they have reduced the rate of re-infraction and mortality. ये जो बीटा ब्लॉकर्स है, बीटा ब्लॉकर्स, यूज ऑफ बीटा ब्लॉकर्स, लॉन्ग टर्म यूज ऑफ बीटा ब्लॉकर्स आफ्टर मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हैज बीन शोन टू रिड्यूस द रेट ऑफ री इन्फ्रैक्शन. एक बार इन्फ्रैक्शन हो गया उसके बाद में ये बीटा ब्लॉकर्स चालू किए थे, री इन्फ्रैक्शन बहुत कम बार होता है एंड उसका जो डेथ होने का चांस है वो कम हो जाता है. दे विल इंक्रीज द लाइफ स्पैन ऑफ योर पेशेंट. Adverse drug reaction of beta blockers for the adverse reaction to the anti-anginal activity. So they can precipitate or aggravate congestive cardiac failure. Beta blockers themselves, they can create congestive cardiac failure. Beta blocker along with the digoxin or digitoxin, they must be monitored because it will increase the activity of digoxin. Development of severe syncope. Syncope means severe hypotension using nitroglycerin for nitrate in patient on the beta blocker. So beta blockers and nitrates, they are also contraindicated. Beta blockers are contraindicated in case of variant angina. We have already seen. Now calcium channel blockers, we was discussing about the calcium channel. So mechanism, they will block. Okay, so you know that calcium, entry of calcium is a cation, entry of calcium inside the cell of smooth muscle of blood vessel will cause depolarization and contraction of your blood vessel. So calcium channel blockers, they will dilate the blood vessel. Again, calcium channels are also responsible for the contraction of myocardium. So by blocking this L type of calcium channel, they also decrease the contractility of heart and they decreases the workload of your heart. Therefore, they will decrease the oxygen demand. Okay. So calcium channel blockers, they mainly act by inhibiting the entry of calcium from L type of calcium channel into myocardial and vascular smooth muscle, decreasing the availability of intracellular calcium. All this drug binds to the alpha 1 subunit of L type of calcium channel. They exert basically negative inotropic effect. Negative inotropic effect मतलब heart rate कम करेगा. So verapamil, liltiazem, they are a negative inotropic drug. These should not be combined with the beta blockers. The treatment of angina of Peyford और क्लासिकल एंजिन, तो ये इनको बीटा ब्लॉकर के साथ में नहीं देना है इन केस ऑफ क्लासिकल एंजिन, क्योंकि बीटा ब्लॉकर भी क्या कर रहे हैं, दे आल्सो डिक्रीजिंग द फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन एंड हार्ट रेट. ये भी क्या कर रहे हैं, ये भी और कम कर रहे हैं. ऑब्वियसली देयर माइट बी चांस ऑफ हार्ट ब्लॉक, दैट्स व्हाई दे आर नॉट कंबाइंड. सो एंटी arrhythmic effect is also there. These drugs also decreases the rate of discharge from SA node. SA node से जो frequency है उसका वो frequency कम करते हुए already seen and suppresses the ectopic pacemaker activity. So they are also anti-arrhythmic effect. Effect on coronary arteries. So they are the coronary artery dilator, potent coronary artery dilator, and they can prevent the spasm of artery also. They can be used in the prismental or angina variant. So calcium channel blockers both type में use किया जाता है. Okay, calcium channel blockers, they are used in the both type of angina, right? What is the effect on peripheral blood vessels? Okay, so they will decrease the peripheral resistance, vascular resistance, and blood pressure will be also be decreased in the both territories, मतलब in the veins also, in the arteries also. तो ये calcium channel blockers peripheral resistance कम करेंगे and blood pressure कम करेंगे. So in that you have three types. You have three types in the calcium channel blockers: phenylalkylamine derivative, verapamil, dibenzodiazepine derivative, diltiazem, and dihydropyrimidines derivatives, 3,6-dihydropyrimidine derivative, known as a depins, nifedipine, nicardipine. Nifedipine is a more potent vasodilator than anti-anginal property due to two reasons. They exert anti-anginal effect. कैल्शियम चैनल ब्लॉक का जो बेनिफिशियल इफेक्ट होता है एंजिना पेक्टोरिस में, वो दो कारणों से होता है. पहला कौन सा है, इंप्रूवमेंट ऑफ कोरोनरी ब्लड फ्लो एंड डिक्रीज इन द ऑक्सीजन डिमांड ऑफ हार्ट by blocking the calcium channels. Okay,
and in systemic vascular resistance also, and blood pressure also decreases. तो एंटी एंजाइनल फैक्टर्स में ये इनका बेनिफिशियल इफेक्ट क्यों है? पहले तो ये इंप्रूवमेंट ऑफ कोरोनरी ब्लड फ्लो, मतलब एक कोरोनरी ब्लड वेसल को डायलेट करता है, ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा. दूसरा क्या करता है? डिक्रीज इन द ऑक्सीजन डिमांड ऑफ हार्ट. कैसे? अगर ये कैल्शियम चैनल ब्लॉक है तो हार्ट रेट कम करेगा, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन कम करेगा. फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन कम हो गया, हार्ट को ऑक्सीजन जितना चाहिए उतना उससे कम लगेगा, है ना. दे विल डिक्रीज द ऑक्सीजन डिमांड ड्यू टू रिडक्शन इन द सिस्टमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस एज वेल एज ब्लड प्रेशर. तो वेरापामिल है आपका, इट कैन कॉज सप्रेशन ऑफ एस नोड एंड एवी नोड. So whatever impulse they are generated by S node AV node, so they will suppress these, which are calcium dependent. Coronary, okay, coronary as well as peripheral vasodilation भी करता है. Coronary artery will be dilated, peripheral blood vessels also dilated. It can cause AV block. It is a potent antiarrhythmic agent, antiarrhythmic effect and potent negative inotropic drug है. So it will have antiarrhythmic effect also. It is a potent, okay, negative inotropic drug. Heart rate कम करेगा. एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या है इसका? कॉन्स्टिपेशन करता है, वर्टिगो, ब्रैडिकार्डिया, देन हार्ट ब्लॉक कर सकता है आपका, ओके, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर कैन प्रेसिपिटेट हाइपोटेंशन, ओके, एंड एंकल एडिमा. Diltiazem, it has a less negative inotropic effect than verapamil and nifedipine. It should be avoided in the patient with the congestive cardiac failure. Nifedipine, it is a more potent coronary artery and peripheral vessel vasodilator, has a negligible inotropic effect on the heart. It is a potent inhibitor of platelet. Platelet जो होता है उसको inhibit करता है platelet. Potent inhibitor of platelet aggregation. Platelet aggregation, and it also relaxes the bronchial smooth muscle, uretic away, and uterine smooth muscle. बाकी smooth muscle को relax करता है. Not only relaxes the smooth muscle blood vessel, but also आपका ब्रोंकाइल स्मूथ मसल रिलैक्स करता है, आपका यूटेराइन एंड यूरेटिक मसल. इसके एडवर्स इफेक्ट क्या है? तो एडवर्स इफेक्ट जो भी वैसोडाइलेशन करेगा वो तो सेरेब्रम में भी करेगा. सो इट विल कॉज हेडेक. वैसोडाइलेशन किया मतलब पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम किया, उसका मतलब क्या? प्रीलोड कम किया, उसका मतलब हार्ट में ब्लड कम आएगा, तो इट विल कॉज टैक्कार्डिया, क्योंकि ब्लड कम आएगा तो हार्ट विल बीट फास्टर. डिजीनेस, फटीग, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, लेग क्रैम्प्स, स्किन रैश एंड जिंजिवल हाइपरप्लासिया. ये जिंजिवल हाइपरप्लासिया जो है ना, ये और एक ड्रग करता है. कौन सा करता है? एनीबडी? व्हिच अनदर ड्रग विल कॉज जिंजिवल हाइपरप्लासिया? यस, एनीबडी, वी हैव ऑलरेडी सीन. एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है वो, फेनिटोइन. सो फेनिटोइन विल आल्सो कॉज जिंजिवल हाइपरप्लासिया. Therapeutically used for treatment of variant angina refractory to the nitrate therapy. Refractory मतलब resistance to the nitrate therapy. Therapeutically, it is used to treat the variant angina which is resistant to the nitrate therapy. Also used in the treatment of hypertension and Raynaud's syndrome. Nicardipine, isradipine, they are similar to nifedipine. Amlodipine का yes isomer, yes amlodipine. Felodipine can be considered as a second generation. Nimlodipine is preferentially dilate the cerebral arteries. तो ये cerebral arteries को dilate करता है, and that's why nimlodipine is preferred in case of cerebral hemorrhage. Cerebral hemorrhage में ये contraction of calcium channel blocker, tight aortic stenosis. aorta को अगर stenosis मतलब बंद हो गया aorta, severe myocardial depression, इसमें भी यूज नहीं करना है, हार्ट ब्लॉक में यूज नहीं करना है. chronic और clinical heart failure, then unstable angina, existing hypotension. पहले हाइपोटेंशन है, उसमें अगर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज करेंगे तो बहुत ज्यादा हाइपोटेंशन होगा, सिंकोप हो जाए और वो मर जाएगा. दैट्स व्हाई दे आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड. आर यू गेटिंग और नॉट? समझ रहा है नहीं? नेक्स्ट मीन्स पोटेशियम चैनल ओपनर. so what potassium channel opener will do? So if potassium channels are open through in the cardiac cell or in the smooth muscle of blood vessel, what will happen? So potassium will come out, and it will come out and it will hyperpolarize the cell, and that's why there is an inhibitory effect to it. So nicorandil, pinacedyl, they are the potassium channel activating property, they are potassium channel opening property, along with the nitric oxide donating property. नाइट्रिक ऑक्साइड भी डोनेट करता है, एंड प्रेफरेंशियली दे विल एक्ट ऑन अ वेनस साइड, मतलब वेन के ऊपर ज्यादा एक्ट होगा, दे विल एक्ट ऑन अ वेनस साइड, reducing the preload, but also on arterial side also reduces the afterload also. Preferentially वो veins को डायलेट करेंगे बाद, लेकिन arteries को भी करते हैं. They are also used as alternative for the
नाइट्रेट्स थेरेपी। नेक्स्ट होता है एंटी प्लेटलेट एजेंट। एंटी प्लेटलेट एजेंट, okay, so whatever drug we have discussed in angina, they are nothing but they are either decreasing the symptoms by decreasing the workload on heart, or they will dilate the blood vessel and they will improve the blood flow. But what this antiplatelet drug will do? So they are involved in the correction. They are involved in the correction. So what antiplatelet drug will do? Like aspirin. So it will prevent the platelet aggregation. They are used for prophylactically in the myocardial infection in patient with the chronic stable and unstable angina. तो क्या होता है कि अगर किसी को मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है तो उसको एस्पिरिन दे दो। एस्पिरिन देने के कारण क्या होता है कि जो आपका प्लेटलेट एग्रीगेशन हो रहा है वो होने नहीं देगा और क्लॉट बड़ा नहीं होगा। देन डायपिरिडामोल इज आल्सो अनदर वन ड्रग, डायपिरिडामोल, सो दैट इज आल्सो एंटी प्लेटलेट। Diaphragmal is antiplatelet, but also it is a vasodilator. It is a weak coronary dilator. That's why diaphragmal. Okay? So it has a dual action, vasodilation also and inhibit the platelet aggregation. है ना, पहले आपका आर्थ्रोमा है आपके ब्लड वेसल में, है ना, deposition of cholesterol and plug. So if more platelet get attracted on that plug and it grows, okay, जो प्लेटलेट प्लग बना है या फिर आपका प्लेटलेट का प्लग छोड़ो, जो भी कोलेस्ट्रॉल का डिपॉजिट हुआ है वहां पे क्या हो रहा है कि जो ब्लड जा रहा है, ब्लड में ब्लड सेल भी है, ब्लड सेल क्या हो रहा है वहां पे रफ सरफेस बना है। सो ब्लड इज kept fluid by स्मूथ वेस्कुलर एंडोथेलियम। अगर वहां पे कोई डिपोजिशन है तो रफ सरफेस बनेगा, तो वहां पे जब सेल टकराएंगे उसको तो वहां पे सेल और ज्यादा अट्रैक्ट होगा, वो जो डिपोजिशन है वो बढ़ते ही जाता है। दैट्स व्हाई एंटीप्लेटलेट ड्रग्स आर यूज्ड। देन नेक्स्ट वन इज साइटोप्रोटेक्टिव। साइटो मतलब सेल, प्रोटेक्टिव मतलब सेल को प्रोटेक्ट करने वाला। तो साइटोप्रोटेक्टिव ड्रग इन दैट यू आर गोइंग टू हैव ट्राइमेटाजिडिन and ranolazine. Trimetazidine. Now what is this? So this trimetazidine is also having calcium channel blocking group. So calcium channel blocker along with the cytoprotective effect on the myocardial metabolism in presence of myocardial ischemia, and it acts by inhibiting the this partial fatty acid oxidase. It's by inhibiting the partial fatty acid. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। So PFOX inhibitor, partial fatty acid oxidase inhibitor. So as I told you, your myocardium will utilize the fatty acid. Fatty acid is not a efficient food. फैटी एसिड ये efficient food नहीं होता है, efficient fuel नहीं होता है हार्ट के लिए, but हार्ट इनिशियली वो यूज करता है। Okay? And after the oxidation of fatty acid, you know that there is generation of free radicals which can damage your myocardium more. So if this oxidation is inhibited, so heart will switch to the glucose. Glucose is the efficient fuel. There is also no generation of that radicals. So that's why it will protect. That's why known as cytoprotective. Okay. Then next is ranolazine. Ranolazine. So it is an approved drug for first line. It is an approved drug first line agent for chronic angina, and it does not have effect on heart rate. ये heart rate को effect नहीं करता, blood pressure को ऊपर कोई effect नहीं है, but and it is safe with the phosphodiesterase inhibitors like sedentary. मतलब ये safe भी है. It is a sodium channel block. It can cause QT prolongation and contraindicated in the patient with the liver and kidney disease. Not used for treat the acute episodes of angina. Ranolazine. Then next आता है ivabradine. Ivabradine. So it acts as it acts by hyperpolarizing the membrane by inhibiting the sodium channel known as a funny current. Okay, funny sodium current, funny current or T current, funny current, funny sodium ion channel. ये slowly depolarize करते हैं. That's why they are known as funny sodium ion channels. So ivabradine inhibit the funny T current. Question इसके ऊपर आता है. Will cause hyperpolarization of sodium. Visual disturbances is the most prominent adverse events of visual disturbance. Next आता है आपका Pausudi. So it is selective, okay, rho kinase inhibitor. A rho kinase it has an important role in a myocardial contraction and cardiac remodeling. ये rho kinase, तो ये भी इसको भी इनहिबिट किया तो भी वर्कलोड कम होता है हार्ट के ऊपर. Pausudi is a selective rho A, that is a rho kinase inhibitor, also used in the angina and cerebral vascular. ये drugs है आपके. Now we'll see the next part. Now it is a representation of coronary hemodynamics. Classical angina में क्या होता है
then select nitrates क्या करते हैं action, selective action of nitrates, and then dipyridamol. So different actions of nitrates and dipyridamol. Classical angina. So what happens in the classical angina or angina of effort or angina exertional angina? There is a deposition of this atheroma in the coronary blood vessel. So that's why there is decreased blood flow to the this area. So here this particular area will develop a ischemia of myocardium. यहाँ तक ischemic dilation of subendocardial resistance blood vessel. स्मॉल सॉल आर्ट्रियोल्स जो होते हैं उसको रेजिस्टेंस ब्लड वेसल बोलते हैं. तो यहाँ पे डायलेशन होगा. क्यों? डायलेशन होने के बाद में ज्यादा ब्लड सप्लाई होने के लिए डायलेशन होगा, बट है ना. लेकिन जो अवे जो the area which is away from this block, so it will develop ischemia, right? So this is not a conducting vessel. Conducting vessel मतलब main branch of your coronary artery, और जो छोटे छोटे ब्रांच होता है उसको बोलते हैं रेजिस्टेंट. In case of nitrates, so if nitrates they are given, what they will do, they will dilate this coronary artery, so blood supply to the heart will increase, so this ischemia will be elude. This ischemia will be elude. Blood flow increases in the ischemic zone. Resistance vessel or non-ischemic zone maintains tone. Then in case of dipyridamol, so dipyridamol is antiplatelet drug. Antiplatelet drug, it will not inhibit, it will not cause any vasodilation. It is a very weak vasodilate, but it is a platelet inhibitor. Okay, what will it do? Decreases the blood flow in ischemic zone. Dilation of non-ischemic zone, dilation of blood vessel in the non-ischemic zone, and okay, and it is also known as a your coronary steel. इसको बोलते हैं अपन coronary steel. Dipyridamol action on the resistant blood vessel flow to the non-ischemic zone to determine an ischemic zone. That is coronary steel. तो इस यहाँ से ज़्यादा blood, okay, so it will decrease the blood flow to the ischemic zone and will increase the blood flow to the non-ischemic zone. तो जहाँ पे इश्यू है, जहाँ पे सेल डेड हो है, वहाँ पे ब्लड फ्लो बढ़ा के कोई फायदा नहीं. जहाँ पे सेल ब्लड कम जा रहा है, जहाँ पे इश्यू हो सकता है, वहाँ पे ब्लड फ्लो बढ़ाता है. Now next is nothing but the myocardial infraction. Myocardial infraction. Okay, what is meant by infract? Infract means what? If there is a cell death. मायोकार्डियम जो होता है आपका, उसमें अगर सेल है उसका डेथ हो गया, जैसे इश्चेमिया हो गया, तो वहाँ पे ब्लड नहीं जा रहा है, ऑक्सीजन नहीं जा रहा, तो वो सेल मरेगा. Am I audible to you? Okay. So myocardial ischemia, due to that there is a death of cell. There is a myocardial infraction. Okay. Congestive coronary heart disease. Okay. The most important cause for myocardial infraction is a coronary heart disease. Coronary heart disease is important cause for premature death in the developed countries. Okay. Developed countries में most of the coronary heart disease के कारण ही myocardial infection होता है, अपन उसको heart attack बोलते हैं. So breaking of arteriomatous plaque in the coronary artery. तो coronary artery में जो जो डिपोजिशन हुआ है, कभी कभी वो क्या है, ब्रेक होता है, बल्जिंग होता है, ब्रेक होता है. ब्रेक होने के बाद में छोटे छोटे टुकड़े में एंड रिजल्ट इन द ऑक्लूजन थ्रोम्बस लीडिंग टू एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन. अभी वो अगर ब्रेक होने के बाद में छोटे छोटे टुकड़े हो गए, अगर कोई स्मॉल ब्लड वेसल में चला गया मायोकार्डियम के, वहाँ पे तो ब्लॉक कर देगा. वहाँ पे जो वो जो एरिया है जिसको वो ब्लड वेसल सप्लाई कर रही है, वो एरिया तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, वो मर जाएगा ना, डेथ हो जाएगा वो टिश्यू का. तो दैट इज नोन एज इम्पैक्ट leading to acute myocardial infarction. This process develops within a 6 to 8 hours. After this, there is a cell death and in the impacted area. Now, if there is a myocardial infection, what are the treatment objective? Treatment objective क्या हो सकता है? The objective of treatment is nothing but to decrease the myocardial ischemia. Myocardial ischemia कम करना है आपको by using dilation or by using antiplatelet. So इसमें क्या है, एनालिसिस यूज करेंगे, तो इसमें पेन जो होता है, पेन रिलीव करने के लिए. So analgesics, so morphine 10 milligram or pethidine 50 milligram intravenously to decrease the pain of myocardial infarction, anxiety. Diazepam can also be used. Okay? So analgesic drugs used in the myocardial infection. तो इसका याद रखना है आपको क्या होता है. एनालिसिक क्वेश्चन आ चुका है. इन द acute myocardial infection to decrease the pain, this drug is used. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है.
morphine drug of choice in case of acute attack of myocardial infarction to decrease the pain. Diazepam can also be used. Now thrombolytics. Why thrombolytics? Because that tiny clot, if that goes into the blood vessel, that will cause tissue death. Okay? So thrombolytics streptokinase, जैसे आपको हार्ट अटैक आता है, streptokinase is very very important. Streptokinase ये क्या है? It is a thrombolytic. It is known as a क्या क्या बोलते हैं इसको? Anybody? कौन सा एक्टिवेटर ना आप पढ़ रहे हो, मैंने पिछले लिया है आपका कोएगुलेंट एंटीकोएगुलेंट थ्रोम्बोलाइटिक्स और वो सब भूल गए हो. इसको कौन सा एक्टिवेटर बोलते हैं बोलो? स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज, अल्टेप्लेज, क्या बोलेंगे उसको? एनीबडी? नो नो रिकमेंडेड तो है ये, अरे अनिस्टप्लेज दैट, बट कौन सा एक्टिवेटर किसको एक्टिवेट करता है? सो स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज, ऑल दीज आर नोन एज अ टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर. कितनी बार पढ़ा है? प्लाज्मिनोजेन को एक्टिवेट करता है. सो एक्टिवेशन ऑफ प्लाज्मिनोजेन विल कन्वर्ट इनसोल्युबल फाइब्रिन इनटू सोल्युबल, है ना? जो इनसोल्युबल फाइब्रिन का थ्रेड होता है उसको ब्रेक डाउन करता है. सो स्ट्रेप्टोकाइनेज 1.5 मिलियन यूनिट्स intravenously for 1 hour. Alternatively, you can use alteplase and other thrombolytics like urokinase, etectase. So they should be started earliest as possible within a 6 to 12 hours. जिसको हार्ट अटैक हुआ है ना, तो उसको अगर प्रॉपरली अपन इमीडिएटली उसको अगर हॉस्पिटलाइज करते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, पहले ये इंजेक्शन मंगा लेता है, पहला इंजेक्शन लगा देता है, तो जो भी क्लॉट होगा वो डिजोल्व हो जाएगा पहले ही झटके में. So like improvement. That's why myocardial infarction, most of the patient you can save just hospitalizing them in a proper time. So they are known as a tissue plasminogen activator. They will activate the tissue plasminogen enzyme, TPA, tissue plasminogen activator. And after activation of this tissue plasminogen, so what happen? The insoluble fibrin thread, जो insoluble fibrin thread मतलब क्लॉट बना है, so that tissue plasminogen convert, so it activates the plasmin. Okay, plasmin convert soluble fibrin into insoluble fibrin. Okay, so that's why that is the breakdown of clot. Then antiplatelet drugs also used. Antiplatelet drug कौन से? Aspirin 300 milligram, 150 to 300 milligram. यहाँ पे 150 to 300 milligram reduces the mortality and improves the effect the thrombolysis. इमीडिएटली अगर मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपको, तो पहले क्या करने का? एस्पिरिन का 2 टैबलेट लेने का, उसको पाउडर करके उसके मुंह में डालने का. क्या होगा कि दिस एस्पिरिन विल कॉज फाइब्रोलाइसिस, थ्रोम्बोलाइसिस, एंड आल्सो prophylactically you can use this aspirin in a 150 to 150 milligram, 75 to 150 milligram. So immediately fibrinolysis के लिए 300 milligram aspirin is effective, and then for prophylaxis for the prevention of this you can use 75 to 150 milligram per day. Then another drug clopidogrel can be used if there is allergy to the aspirin. अगर aspirin का allergy है तो clopidogrel यूज कर सकते हो, clopidogrel. So एनालिसिक ड्रग मॉर्फिन वगैरह, पेथिडीन वगैरह, डायजेपाम वगैरह, थ्रोम्बोलाइटिक काइनेज वाले, एंटीप्लेटलेट एस्पिरिन एंड दिस क्लोपिट्रोगेल. देन हाई ऑक्सीजन in myocardial infarction, oxygen high flow should be given by inhalation. Other drugs, supporting drugs, beta blockers. Supporting drug कौन सा है? Beta blockers. So atenolol intravenously 5 to 10 milligram over 5 minutes produces a short-term mortality. Lower the incidence of arrhythmia. Antiemetic drug intravenously suitable for okay. Antiemetic drug भी दे सकते हैं intravenously. Antiarrhythmic drug because arrhythmia is the most common in the patient with the myocardial infarction. Beta blockers important. So this is nothing but the your myocardial infarction. Okay? You can see over here myocardial ischemia क्यों होगा? क्योंकि coronary artery में यह क्लॉट है, क्लॉट बन गया. वो क्लॉट अगर ब्रेक होगा तो वो छोटे छोटे ब्लड वेसल में जाएगा और सप्लाई बंद करेगा, तो उसमें your tissue death, myocardial ischemia, that result in the cardiac pain, chest. Analgesics like morphine, pethidine, they can relieve. Then anxiety and apprehension, डर जाता है आदमी, उसमें डायजेपाम यूज कर सकते हैं, and that leads to sympathetic stimulation. एंजाइटी apprehension जो होता है, एंजाइटी हो गई तो sympathetic stimulation होगा, नॉरएड्रेनलिन, तो बीटा ब्लॉकर यूज करना है. Sympathetic stimulation increases the cardiac workload and decreases the cardiac efficiency. बीटा ब्लॉकर यूज करेंगे तो ये नहीं होगा. Then
increase the cardiac workload and cardiac efficiency worsens the myocardial ischemia again. अगेन ये myocardial ischemia पर जाएगा एंड उसके बाद में सेल का डेथ होगा. नॉर्मली क्या होता है कि ऐसा होता है कि जैसे आपको myocardial ischemia होगा, उसका रीजन से chest pain होगा, chest pain, okay, then because of that chest pain you will have anxiety and apprehension, and that leads to stimulation of sympathetic nervous system, so which will increase the cardiac workload by increasing the heart rate and pulse of contraction, decreases the cardiac efficiency. So because of that there is a worsening of myocardial ischemia and cell death. So okay, so you can decrease the cardiac pain by using analgesic. Okay? You can decrease the cardiac pain by using analgesics. You can decrease the anxiety and apprehension by using diazepam and other drugs. Okay? You can decrease the sympathetic stimulation by using beta blockers. Okay? You can decrease the workload and cardiac efficiency. Okay? You can decrease the workload and increase the cardiac efficiency by using vasodilators. You can use fibrinolytics, okay, like your streptokinase urokinase to break down that clot. This is the drug used in the myocardial infraction. Myocardial infraction के ऊपर चैप्टर नहीं है, पूरा थोड़ा सा इंफॉर्मेशन रहता है, इसलिए वो थोड़ा ये लिया है. Now this will end your angina pectoris and myocardial infraction. If anybody has doubt in this, they can ask.